I hope I am audible to you. 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 Good evening to all. I hope I am audible to you. Good evening to all. I hope I am audible to you. Good evening to all. I hope I am audible to you. Good evening to all. I hope I am audible to you. Good evening to all. So, good evening to all. I hope I am audible to you. Good evening to all. I hope I am audible to you. Good evening to all. I hope I am audible to you. Today we are going to see the next part, that is the 11th part of your antibacterial drugs, and in that we are going to see, okay, good evening, medical knowledge. Okay, so today we are going to see the another part, and which is the last part of your antibacterial drugs. Tomorrow we'll take antiviral drugs. So today we are going to see the anthalmentic drugs. Today we are going to see the anthalmentic drugs. Anthalmentics. So anthalmentics means what? These are the drugs which will expel or which will remove your helminthiasis. So helminthiasis means what? What do you mean by helminth? So helminth refer to the worms. These are the worms. So in your GIT you have it is a environment for growing of various kind of worms and bacteria. तो आपका GIT में worms होता है. बचपन में देखो कभी कभी आपको जब आप लैट्रिन करते हो उस टाइम पे कुछ worms निकलते हैं आपके excreta से. तो helminth means these are the worms which infect the your GIT mostly, but some worm also infect the another areas, another tissues like liver and all that, and some will cause different disease also. So helminth of medical importance. कौन से helminths होते हैं, कौन से worms होते हैं. So helminths are of three type. So round bodied, so they will have round body shape, then flat bodied and flux. Round bodied, for example, like they are known as the nematodes. Okay, round bodied, they are known as the nematodes. So example, hookworm, roundworm, pinworm, then whipworm, then strong stercoralis, then strong circulation, filarial, that is a Bancroft filaria, so which causes the filariasis. Yeah. Flat body होता है जिनका flat bodied, they are known as the cystodes. Nematodes, cystodes and trematodes. Cystodes. Flat bodied, they are known as cystodes, also known as a tapeworm. So example is a beef worm, ये beef में पाया जाता है. Pork worm, pork में पाया जाता है. Dwarf worm, fish worm, and E. granulosus worm, right? Then flukes, they are known as the trematodes or flukes. So they are intestinal flukes or lung flukes or liver flukes or blood flukes, depending on the invasion. So helminth of medical importance, these are the different worms or helminth which will cause infection, which will cause helminthiasis, and drug which removes the worms or drug which expel the worms from intestine, known as anthalmentics. Today we are going to see that chapter, anthalmentics. So anthalmentics means what? These are the drug which removes the worms. So common type of feline intestinal worms. देखो कुछ worms है intestine में से. Some intestinal worms, so they are round worms. So they will look like a round, and they are in a 3 to 6 inches. Whipworm जो से whipworm, so will look like this, 2 to 3 inches. Hookworm look like a hook, 1 to 8 inch, depending on the size. Then tapeworm will look like this. Now you might have seen people
है ना, people of your coastal area or developing countries, they are due to poor hygiene, poor social and personal hygiene, that leads to infection of this worms known as a helminthiasis. One of the infection is known as a filariasis. You might know this filariasis. इसको बोलते हैं हाथी रोग और elephantitis. Filariasis or elephantitis, that is caused by bankruptcy filari. So this is also because of the worm. So you will get a elephant like leg, है ना. So bankruptcy filari. So filariasis is a kind of helminthiasis. Now we'll see one by one. So drugs used in the treatment of helminthiasis known as anthalmentic drugs, or these are the drugs which will expel or which will remove the worms from intestine. Now drugs used in the helminthiasis. तो पहला है drug which are used to treat the roundworms, hookworms, pinworms. For roundworms, hookworms and pinworms, so albendazole, mebendazole, then parental palmoate, piperazine and levamisole. Piperazine, parental palmoate, mebendazole, albendazole. Albendazole मोस्टली ये कॉमन रहेगा आपको हर एक क्लास में. पहला क्लास है ड्रग्स विच आर यूज्ड फॉर राउंडवर्म, हुकवर्म, पिनवर्म्स. दूसरा क्लास है ड्रग्स विच आर यूज्ड फॉर थ्रेडवर्म्स. इवरमेक्टिन इज देयर and albendazole is there. We are going to see this chapter from GPAT point of view, Niper point of view or the exam point of view, right? So पहला क्लास है आपका ड्रग which are used to treat the roundworms, hookworms and pinworms. Albendazole, mebendazole, parental palmoate, piperazine and levamisole. Second class है ड्रग which are used to treat the threadworms, ivermectin, albendazole. Third class आएगा आपका for the treatment of whipworm, then Trichinella spiralis. Example is again albendazole, mebendazole, because the albendazole and mebendazole both are the broad spectrum anthalmentic drug. Now for the treatment of filariasis, so you have diethyl carbamazine, ivermectin and albendazole. For tapeworms, you have praziquantel, niclosamide, albendazole, and for हाइडेटाइड डिसीज you have albendazole and mebendazole again. मोस्ट ऑफ दिस में albendazole mebendazole आता है. बस फिलरियासिस में एक बार क्वेश्चन आ चुका है. ड्रग ऑफ चॉइस इज डाइथाइल कार्बामेजिन साइट्रेट. तो DEC इज द, इसको शॉर्ट फॉर्म में DEC बोलते हैं, डाइथाइल कार्बामेजिन साइट्रेट. दैट इज अ ड्रग ऑफ चॉइस इन द फिलरियासिस, राइट. So we'll see chemotherapy of helminthiasis. So helminthiasis means what? It is infection of worms. So anthalmentic drug means what? Anthalmentic drug which are used to kill or remove the worms. So drug which may be either wormicidal, means killing the worms. The term wormicidal means killing the worms, and the term vermifuge means to expel the worms from intestine. So these are the drugs which will kill or remove the worms, you know. So in a short I will discuss this important drugs, their mechanism and adverse effect, because इसके बाहर ज़्यादा कुछ नहीं आता है. You can expect maximum 1 or 2 questions. So first drug is a levamisole. So it is as the name indicates, levamisole, levoisomer of tetramycol. It is a levoisomer of tetramycol. इसके ऊपर एक बार क्वेश्चन आ चुका है. So levamisole is a levoisomer of tetramycol. So tetramycol itself is available as a racemic mixture, and anthalmetic activity is because of the L-tetramycol. And mechanism of action, site of action क्या है इसका? Site of action, so site of action is a neuromuscular transmission, है ना, neuromuscular transmission. तो पहला क्या करता है, एक गैंग्लियोनिक निकोटिनिक acetylcholine receptor at the neuromuscular junction. So it will act at a ganglionic nicotinic acetylcholine receptor at a neuromuscular junction. तो क्या करता है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख लो उसका. It stimulate the nicotinic acetylcholine receptor, produces the persistently
a depolarization, persistently a depolarization or stimulation due to continuous stimulation of muscular contraction that leads to paralysis. And due to paralysis the holding capacity of worms in the intestine. worms कहाँ पे होते हैं? इंटेस्टाइन में आते हैं. आपको इंटेस्टिनल लाइनिंग को ये होल्ड करते हैं बाय देयर डिफरेंट ऑर्गन्स. तो वहाँ पे न्यूरोमस्कुलर है ना, न्यूरोमस्कुलर एक तो डीपोलराइजिंग टाइप न्यूरोमस्कुलर और मतलब दिस लिवेमिसोल तो हाइपरपोलराइजेशन करता है, डीपोलराइजेशन करता है. कंटिन्यूअस डीपोलराइजेशन लीड्स टू पैरालिसिस ऑफ दैट मसल ऑफ वर्म that leads to expel. Okay, also interfere with the metabolism of carbohydrate of the your worm. Now adverse reaction क्या है? nausea, vomiting, diarrhea, then abdominal pain, giddiness and drowsiness. It is used in the ascariasis also and cyclostomasis and cyclostomasis. नेक्स्ट है पैरेंटल पामोएट. So it is a depolarizing type of neuromuscular blocking action. It causes the spastic paralysis to the worms. Again anorexia, nausea, vomiting, diarrhea, abdominal pain, drowsiness, increased AGOT levels, used in the treatment of ascariasis and enterobiasis. तो यहाँ पे याद रखना है लिवेमिसोल इज लिवो आइसोमर ऑफ टेट्रामिसोल, राइट, लिवो आइसोमर ऑफ टेट्रामिसोल. आई विल सी द नेक्स्ट ड्रग्स. नेक्स्ट ड्रग इज नथिंग बट द So next drug is nothing but the piperazine or piperazine. So it will act at a neuromuscular junction again in a GABA receptor of neuromuscular junction. Mechanism of action क्या है इसका? So GABA agonist है, causes the hyperpolarization and flaccid paralysis of worms muscle, smooth muscle, not skeletons. So कॉमन एडवर्स इफेक्ट है इसके यूट्रिक एरिया रियरली. इट कैन कॉज वर्टिगो, मस्कुलर इनकोऑर्डिनेशन, हाइपोटोनिया, एटेक्सिया, ब्लरिंग ऑफ विजन. द ड्रग इज सेफ इन अ प्रेगनेंसी. पिप्राजिन यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ एस्क्रियासिस इन द अडल्ट, एंटेरोअमीबियासिस एंड आल्सो फॉर राउंड वर्म्स. पिप्राजिन. नेक्स्ट ड्रग है आपका इवरमेक्टिन. तो ऑप्टेन फ्रॉम स्ट्रेप्टोमाइसिस एवरमेटिकस. ऑप्टेन फ्रॉम स्ट्रेप्टोमाइसिस एवरमेटिकस. इट इज अ मैक्रोसाइक्लिक लैक्टोन, याद रखना है. साइड के आगे न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन. तो इट विल एक्ट ऑन अ ग्लूटामेट गेटेड क्लोराइड आयन चैनल साइड न्यूरोमस्कुलर जंक्शन इन इनवर्टिब्रेट. क्या करता है? मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कॉजेज द टोनिक पैरालिसिस ऑफ माइक्रोफिलरी which is then immobilized and phagocytosed by enterochromatin like cell, enterocytes. Now it can cause ocular inflammation. Phagocytopathy क्या है इसका? Ocular inflammation may leads to blindness, itching, edema, arthalgia and headache. So used in the treatment of onchocerciasis, then lymphatic filariasis, intestinal nematodes infections, scabies, and also used in the treatment of head lice. आपको जो बालों में जो जू आता है उसका head lice infection. Next we'll see. Next is a metrifonate. ये क्या है? It is a organophosphate insecticide. होता है ये. It is also a prodrug. Activity is due to active metabolite known as a डाइक्लोरोवास. याद रखना है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है. डाइक्लोरोवास इज एक्टिव मेटाबोलाइट ऑफ मेट्रिफोनेट. साइड क्या है? एसिटिल कोलिन स्ट्रेस. इट इज द इनहिबिटर ऑफ एसिटिल कोलिन स्ट्रेस लाइक अदर पेस्टिसाइड्स. इट विल इनहिबिट द एसिटिल कोलिन स्ट्रेस. So inhibition of acetylcholine कॉजिंग द न्यूरोमस्कुलर contracture.
तो अगेन इसका एडवर्स इफेक्ट है GIT डिस्टर्बेंसेस, वीकनेस, वर्टिगो एंड डिजीनेस. यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ हेमाटोबोलियम इन्फेक्शन. हेमाटोबोनियम इन्फेक्शन. praziquantel साइट क्या है, अगेन सेल मेम्ब्रेन. मैकेनिज्म क्या है, इंक्रीजेस द कैल्शियम इनफ्लक्स लीडिंग टू मस्कुलर कॉन्ट्रैक्चर. ड्रग ऑफ चॉइस इन द ट्रीटमेंट ऑफ टीनियासिस. ड्रग ऑफ चॉइस इन द ट्रीटमेंट ऑफ टीनियासिस. नेक्स्ट important mebendazole, albendazole and thiabendazole related compounds. They are known as a broad spectrum and a broad spectrum anthalmentic drug. इसके ऊपर क्वेश्चन भी आ चुका है मैकेनिज्म के ऊपर. Now site of action क्या है, so microtubules in the cystoskeleton of the worm. तो cystoskeleton of microtubules. Mechanism of action क्या है, they will block the transport of secretory granules and movement of other subcellular organelles. It inhibits the microtubule polymerization by binding to a beta tubulin of microtubule of worm. तो माइक्रोट्यूबुल का नाम सुनते ही आपको मेबेंडाजोल याद रखना है ना, यम फॉर यम, माइक्रोट्यूबुल और ट्यूबुलिन, मेबेंडाजोल. तो मेबेंडाजोल, अल्बेंडाजोल, थाइबेंडाजोल है ना. एडवर्स इफेक्ट क्या है इनके, एब्डोमिनल पेन, डायरिया in a large doses if you take. Yeah, it can cause vertigo also, dizziness, headache, arthalgia, and also a teratogenic in the animals. Male में अभी confirm नहीं है. So used in the treatment of ascariasis, enterobiasis, trichuriasis, hydatiditis, strongyloidiasis. It is a broad spectrum anthalmentic unit. इसके मैकेनिज्म एंड ब्रॉड स्पेक्ट्रम इंपॉर्टेंट है. निक्लोसामाइड नेक्स्ट है, निक्लोसामाइड साइट क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया. मैकेनिज्म इनहिबिशन ऑफ एरोबिक फॉस्फोरिलेशन ऑफ ADP लीडिंग टू डेथ ऑफ द पैरासाइट. ठीक है, थोड़ा माइल्ड GIT डिस्टर्बेंस करता है. डाइथाइल कार्बोनाजिन साइट्रेट इज अ पिप्राजिन डेरिवेटिव, डाइथाइल कार्बोनाजिन साइट्रेट. So it acts by sensitizing the microfilari so that they become susceptible for the phagocytosis. तो जो आपका वर्म है उसका माइक्रोफिलरी जो है उसका सेंसिटिविटी, उसका सेंसिटाइजेशन करता है, and that will become susceptible for phagocytosis by our cells, and they are trapped by reticuloendothelial cells in the liver. इसका एडवर्स इफेक्ट क्या है, एनोरेक्सिया, नोशिया, वोमिटिंग, डायरिया है ना, टेकिकार्डिया, लिम्फेडेनोपैथी, मस्कुलर पेन एंड आर्थल्जिया. यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ फिलरियासिस एंड आल्सो फॉर द प्रोफिलैक्सिस ऑफ ट्रॉपिकल यूसिनोफिलिया लोफर्स सिंड्रोम. तो देखो ड्रग ऑफ चॉइस, देखो इसमें से ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ दिस ड्रग. तो कॉमन नेम, ड्रग ऑफ चॉइस एंड कॉमन नेम. तो राउंड वर्म है ना, इंटेस्टिनल नेमाटोड्स, ये इंटेस्टिनल नेमाटोड्स है. तो राउंड वर्म, हुकवर्म, पिनवर्म, तीनों के लिए क्या है, तो ड्रग ऑफ चॉइस अल्बेंडाजोल एंड मेबेंडाजोल. ड्रग ऑफ चॉइस अल्बेंडाजोल, मेबेंडाजोल. देन विपवर्म, अल्बेंडाजोल. थ्रेडवर्म, इवरमेक्टिन. पॉक राउंडवर्म, अल्बेंडाजोल. नाउ सोमेटिक नेमाटोइड्स, तो है ना, लिम्फेटिक फिलेरियल वर्म, डाइथाइल कार्बोनाजिन DEC. Ocular or dermal filarial worm, ivermectin is a drug of choice. Guinea worm or guinea worm, metronidazole. Nematodes में all kind of blood flux, praziquantel is drug of choice, है ना. Liver fluke, Chinese liver fluke, giant internal fluke, lung fluke, praziquantel. All kind of tapeworms, इसमें भी praziquantel as a drug of choice. तो है ना, worms देखो, राउंड वर्म करता है, राउंड वर्म क्या करता है आपका, एस्केरियासिस करता है. तो वर्म दैट इज एस्केरिसिस लैम्ब्रिकोइड्स, ये इसका नाम है. एस्केरिसिस एस्केरिस लैम्ब्रिकोइड्स, ये इसका साइंटिफिक नेम है. तो इन दैट ड्रग ऑफ चॉइस इज अल्बेंडाजोल, मेबेंडाजोल और पैरेंटल. अल्टरनेटिव इज पिप्राजिन. हुकवर्म कौन है, दिस इज एंसाइलोस्टोमा duodenary. नेक्टर अमेरिकानस, अगेन ड्रग ऑफ चॉइस सेम, अल्बेंडाजोल, मेबेंडाजोल. अल्टरनेटिव है पैरेंटल. पिनवर्म कौन है, एंटेरोबियस वर्मिकुलरिस.
pinworm, enterobius, vermicularis. Drug of choice again 10. Mebendazole, albendazole, parental. Piperazine is alternative. Whipworm मतलब क्या? Trichuris trichura. Mebendazole is drug of choice, albendazole is alternative. ना likewise this ये आपको ये चार्ट मिलेगा. You will find this chart in a pharmacology by Utpadmaja Uday Kumar. Likewise that filariasis is caused by Wucheria bankrupti और बर्जिया मलाई, है ना, ये याद रखना है. इसके ऊपर क्वेश्चन आता है ना. Wucheria bankrupti, है ना. वी बोलो विचारिया, है ना, विचारिया बैंकॉप्टी. उसका प्रोनाउंसिएशन डब्ल्यू यू को वी बोलो, उसको डब्ल्यू यू को वी बोलो. विचारिया बैंकॉप्टी और बर्जिया मलाई बिकॉज इज द फिलारियासिस. तो ड्रग ऑफ चॉइस. दिस विल एंड दैट एंथाल्मेंटिक आल्सो. ये एंथाल्मेंटिक बहुत ही सिंपल चैप्टर है और इसमें ज़्यादा कुछ आपका है नहीं. ज़्यादा कुछ इसमें एक या दो क्वेश्चन आ सकता है. नाउ विल सी द एंटीवायरल ड्रग्स. नाउ विल सी द एंटीवायरल ड्रग्स. तो एंटीवायरल ड्रग्स नाउ विल सी द एंटीवायरल ड्रग्स. So antiviral drugs means what? These are the drugs which are used in the treatment of viral infection. So antiviral drugs. Drugs which are used in the treatment of viral infection. So this is a lengthy chapter. I will try to cover today and tomorrow. Virus क्या है? Virus is a intracellular parasite. Virus is a intracellular parasite that totally depends on the host cell for its food growth and multiplication. तो वायरस आप इसे हवा से आइसोलेट नहीं कर सकते ना. तो वायरस इज a intracellular parasite, सेल के अंदर ही होता है ना. When there is infection, then only you can isolate, you can only inoculate that virus. So intracellular parasite totally depends on the host cell for food growth and multiplication. Now steps involved in the viral infection or step involved in the viral multiplication in the host cell. So once you know this, है ना, तो आपने माइक्रोबायोलॉजी में आपने जाके देखा हुआ टाइप्स ऑफ वायरस, है ना, डीएनए वायरस, आरएनए वायरस, है ना, साइटोमेगालो वायरस, बहुत सारे वायरस है. उनके डिसीजेस भी दिए होंगे माइक्रोबायोलॉजी में. एंड वहाँ पे लाइसोजेनिक साइकिल, लाइटिक साइकिल आपने देखा हुआ ना. सो टुडे हियर विल सी द लाइफ, है ना, स्टेप्स इन द मल्टीप्लिकेशन ऑफ वायरस इन द होस्ट सेल. पहला स्टेप क्या है? तो वायरस विल अटैच टू योर सेल मेम्ब्रेन. तो अटैचमेंट ऑफ वायरस टू ए होस्ट सेल मेम्ब्रेन, दैट इज द फर्स्ट स्टेप. सेकंड टाइम आफ्टर दैट, so it will go into the cell. Second step is known as the penetration of virus into the cell. Third step, it will uncoat itself, है ना, उसका जो है ना, उसको uncoat करेगा and release the genetic material. So release and uncoating of viral DNA, RNA, and then DNA, RNA will be replicated. So RNA virus is there. अगर RNA है तो RNA का DNA बनेगा by reverse transcriptase, and then उसका रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन हो जाएगा. बिकॉज वो सेल में आया किस लिए है? ग्रो होने के लिए ना, मल्टीप्लाई करने के लिए. देन फोर्थ स्टेप इज द सिंथेसिस ऑफ वायरल कंपोनेंट, वायरल प्रोटीन, एंड देन असेंबलिंग एंड मैच्योरेशन ऑफ दैट वायरस. लास्ट स्टेप क्या है? रिलीज होगा. लास्ट स्टेप इज रिलीज ऑफ मैच्योर्ड वायरल पार्टिकल फ्रॉम द होस्ट सेल. दिस कैन बी शोन, दिस कैन बी शोन बाय दिस डायग्राम. देखो यहाँ पे दिस इज नोन एज द वायरस. एक वायरस जैसे कोरोना वायरस जैसे, तो कोरोना वायरस जैसा ये वायरस है. So it will get entry into the cell, so it will infect the cell. Now first step is a entry or attachment, attachment. Then it will uncoat itself. देखो ये पूरा वायरस था, अभी यहाँ पे अनकोड हो रहा है. वो अनकोड होने के बाद में क्या करेगा? उसका जेनेटिक मटेरियल रिलीज करेगा. तो इफ जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए, then DNA will be replicated. If genetic material is RNA, then RNA is converted into DNA by reverse transcriptase. So that occurs in the retrovirus. जो HIV वायरस होता है या रिट्रोवायरस जो होते हैं उसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज नाम का एंजाइम होता है. दैट विल कन्वर्ट RNA into DNA and then DNA replication, transcription, translation. Central dogma of life. अपन ने देखा है बायोकेमिस्ट्री में. After that there is a
transcription and protein synthesis and transcription and translation. Now these are the non-functional protein, है ना. बाद में इसका assembling होता है, right? Then lastly you will get a that mature virus. वायरस मैच्योर होता है, बाद में ये रिलीज होगा, ये रिलीज हो जाएगा, रेडी टू इन्फेक्ट द अनदर सेल. तो एंटीवायरल ड्रग्स आर नॉन सिलेक्टिव इन एक्शन एज कंपेयर टू एंटीबैक्टीरियल ड्रग. एंटीबैक्टीरियल ड्रग is selective because there is difference in the cell of bacteria and human cell, but antiviral drugs are not selective. क्यों? Because virus is intercellular parasite. आप ही के सेल में आएगा, आप ही के सेल का मेटाबोलाइट्स यूज करेगा, आप ही के सेल का खाना यूज करेगा, आप ही के सेल का डीएनए यूज करेगा, इंटीग्रेट भी करेगा. एंटीवायरल ड्रग्स आर नॉन सिलेक्टिव बिकॉज, है ना, so it will use your own cell machinery to synthesize the more particles of virus, I know. So it can affect host cell also. Different targets for antiviral drugs may be either, क्या क्या हो सकते हैं target? There are two type of viruses, DNA virus and RNA virus. They are differs in their genetic material. दोनों में difference क्या है? Genetic material. एक में DNA होता है, एक में RNA होता है, and their replicative cycle, and replication की cycle. DNA virus depends on the host cell enzyme. DNA virus depends on the host cell enzyme mRNA polymerase for the synthesis of mRNA from DNA. But RNA virus, they have their own mRNA polymerase for synthesis of mRNA. ये difference. Now, है ना, तो different shapes of viruses. देखो, एक helical shape virus होता है, known as tobacco mosaic virus. Helical shape virus. उसका genetic material है DNA. उसका genetic material है RNA, single stranded है. Second is a polyhedral shape. Example is adenovirus. Then spherical shape influenza virus. Spherical shape मतलब ये कोरोना वायरस के जैसे ही, because इसके ऊपर क्राउन्स होते हैं, कोरोना वायरस. Then complex like a bacteriophage. Bacteriophage मतलब क्या है? When virus attack a bacteria, that is known as bacteriophage. So genetic material is there in a capsid, and this is known as a tail, है ना. Now RNA virus are also known as a retrovirus. तो some retrovirus मतलब क्या है? तो फॉर एग्जांपल ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, HIV वायरस जो है, so responsible for the AIDS infection will have a reverse transcriptase enzyme. तो RNA वायरस होता है, जैसे आपका रेट्रोवायरस में आता है एग्जांपल HIV वायरस, that is a retrovirus which has a enzyme known as a reverse transcriptase. As the genetic material of this virus is a इसका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? RNA होता है ना. तो इसमें RNA जेनेटिक मटेरियल है, तो DNA तो है ही नहीं. DNA का रेप्लिकेशन कैसे होगा फिर इसमें? तो आपने तो बोल के रखा है बायोकेमिस्ट्री में, सेंट्रल डॉगमा ऑफ लाइफ इज अ रेप्लिकेशन ऑफ DNA and then DNA to RNA, RNA to protein. That is सेंट्रल डॉगमा ऑफ लाइफ. तो जो RNA वायरस है इसमें ये तो है ही नहीं, DNA तो है ही नहीं, तो फिर तो बट these kind of viruses they will have one enzyme. तो जैसे ही सेल में एंट्री करते हैं, DNA RNA रिलीज करते हैं, RNA का DNA बनाते हैं. कैसे? they will have a reverse transcriptase enzyme. They will have a reverse transcriptase enzyme responsible for the replication of, है ना, responsible for the conversion of RNA to DNA, and then DNA will be replicated. First of all immature viral particles are formed. जैसे ही एंट्री करता है तो वो, है ना, रिलीज करता है DNA RNA और रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन. तो फर्स्ट ट्रांसलेशन मतलब प्रोटीन सिंथेसिस. So firstly, immature viral particles are formed and it become mature with the help of enzyme known as the proteases. The proteases a kind of enzyme, very important for the maturation of virus, and reverse transcriptase, you know, that convert RNA to DNA. So these two are the targets for your drugs, है ना. They are the targets for anti-HIV drug. तो एंटी-HIV ड्रग में देखो, प्रोटीज इनहिबिटर, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर, तो न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर, नॉन न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर, ये क्लास आएंगे आपको, बिकॉज
दे आर द टारगेट्स। एग्जांपल्स ऑफ डीएनए वायरसेस, एग्जांपल क्या है, हर्पिस है ना, हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस, वेरिसिला जोस्टर जो आपको नागिन कराता है, नागिन नाम का एक डिसीज होता है ना, स्मॉल पॉक्स वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस, ह्यूमन साइटोमेगालो वायरस। आरएनए वायरस कौन है, रेबीज वायरस है, रूबेला, मीजल्स है, डेंगू, येलो फीवर वायरस इज पोलियोमाइलिटिस वायरस एंड HIV इन्फ्लुएंजा वायरस आर एग्जांपल ऑफ आरएनए वायरस। तो कभी कभी क्या है, क्वेश्चन आता है डीएनए वायरस का एग्जांपल क्या है, आरएनए वायरस का एग्जांपल क्या है, तो यहाँ पे मैंने कवर किया है। ठीक है, नाउ अगेन टारगेट्स फॉर एंटीवायरल ड्रग्स। टारगेट्स क्या है एंटीवायरल ड्रग के, तो देखो यहाँ पे, तो दिस इज नोन एज अ वायरस, सो दिस वायरस विल अटैच टू ए होस्ट सेल। ये वायरस है और ये क्या है, होस्ट सेल। so this virus will attach to a host cell, so that is known as the attachment of virus to the host cell ना। पहला स्टेप है आपका अटैचमेंट ना, अटैचमेंट। virus will attach to a host cell, after that it will go into the cell known as a penetration, after penetration ये जो वायरस है it will unwind and it will release the genetic material, मतलब क्या, uncoating and then release of genetic material, then it will use the machinery of cell and start replicating the DNA replication होगा, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन। तो अर्ली प्रोटीन सिंथेसिस, सबसे पहले अर्ली प्रोटीन सिंथेसिस मतलब क्या, जो भी एंजाइम्स लग रहे हैं उसके लिए, इसके लिए रेप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन के लिए वो कलेक्ट करेगा, है ना, दैट इज नोन एज एंजाइम्स और है ना, दिस अर्ली प्रोटीन सिंथेसिस। देन न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस रेप्लिकेशन करेगा, देन लेट प्रोटीन सिंथेसिस मतलब स्ट्रक्चरल प्रोटीन सिंथेसिस, है ना, तो स्ट्रक्चर बनाने के लिए, तो जब ये कंपोनेंट बनाएगा तो फिर बाद में पैकिंग करेगा और बाद में नया वायरस रिलीज हो जाएगा। नाउ व्हाट आर द टारगेट्स फॉर एंटीवायरल ड्रग, so some antiviral drug will prevent the attachment of virus to the host cell. Example is nothing but the enfuviratide, miraviroc, docosanal and palivizumab. Enfuviratide, then miraviroc, docosanal, palivizumab. These are the drugs which are known as the entry inhibitor of attachment prevent. Then after that entry ये uncoating करता है, तो some drug will prevent the uncoating of virus known as the amantadine and rimantadine. They will prevent the uncoating of drug. After that early protein synthesis is there, so that is inhibited by formiviracin. And after that nucleic acid synthesis, so all antimetabolite and reverse transcriptase inhibitor, और उसमें न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर आता है, नॉन न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर आता है। अगर यहाँ पे नहीं आप उसको इनहिबिट कर सकते हो, तो यू आर अनदर टारगेट। लेट प्रोटीन सिंथेसिस होता है, तो उसमें प्रोटीज एंजाइम एज अ की रोल, प्रोटीज इनहिबिटर्स आर यूज्ड। अगेन ये नहीं हुआ तो सिंथेसिस हो जाएगा पार्टिकल्स एंड वो पैक करेगा खुद को वायरस को, है ना, दैट इज इनहिबिटेड बाय रिफम्पिसिन। एंड आफ्टर दैट packing that is released, or release is regulated by neuraminidase enzyme. Neuraminidase inhibitor can prevent the release, and you know, so likewise this is the different targets for antiviral drugs. So you can see the classification of antiviral drug over here. तो again यहाँ पे देखो, तो this is the virus which will attach to your host cell. ये क्या है, ये है आपका host cell. Virus will attach to a host cell. That can be prevent, है ना, पहले तो अटैचमेंट होगा, तो अटैचमेंट आफ्टर दैट it will come to the in the cell. After that there is uncoating मतलब will release the genetic material. Now after that, है ना, it will synthesize replication transcription translation, so nucleic acid synthesis, after that protein synthesis, then है ना, प्रोटीन मतलब स्ट्रक्चरल प्रोटीन बनाएगा, ये कुछ फंक्शनल प्रोटीन बनाएगा, बाद में स्ट्रक्चरल प्रोटीन का असेंबली करेगा, नया वायरस आपका सेल से रिलीज हो जाएगा, दूसरा सेल को इन्फेक्ट करेगा। तो अटैचमेंट इज प्रिवेंटेड बाय enfuviratide, miraviroc and palivizumab. Uncoating is prevented by amantadine and rimantadine.
Then DNA polymerase inhibitor, nucleotide reverse transcriptase inhibitor, non-nucleotide reverse transcriptase inhibitor, they prevent the synthesis of nucleic acid. Some drug inhibit the protein synthesis known as by inhibiting the protease enzyme को inhibit करता है, है ना. Rifampin will prevent the assembling of these viral particles and release is prevented by neuraminidase inhibitor. So sites for antiviral drug, ठीक है, sites for antiviral drug. Now we'll see the classification of antiviral drugs. Classification of antiviral drug. पहला क्लास है आपका नॉन रेट्रोवायरल एंटीवायरल ड्रग. रेट्रोवायरस में नहीं है, नॉन रेट्रोवायरल एंटीवायरल ड्रग. तो पहला है एंटी हर्पेस सिम्प्लेक्स वायरस, एंटी हर्पेस वायरस ड्रग. उसमें आइडोक्सियूरिडिन, ट्राइफ्लूरिडिन, एसाइक्लोविर, वैनसाइक्लोविर, गैनसाइक्लोविर, सिडोफोविर एंड फॉस्कारनेट. ये एग्जांपल क्या है? एंटी हर्पेस वायरस, आइडोक्सियूरिडिन, ट्राइफ्लूरिडिन, एसाइक्लोविर, वैनसाइक्लोविर, गैनसाइक्लोविर, सिडोफोविर एंड फॉस्कारनेट. देन सेकंड क्लास आएगा आपका एंटी इन्फ्लुएंजा ड्रग्स, एंटी इन्फ्लुएंजा वायरस ड्रग्स. इसमें अमेंटेडिन आता है, रिमांटेडिन, ओसल्टामाविर एंड पेरामाविर. तो ओसल्टामाविर ये इट इज अ ड्रग ऑफ चॉइस इन ट्रीटमेंट ऑफ एक व्हेन आई वाज इन अ B.Pharm देयर वाज वन इन्फेक्शन एट द टाइम, नोन एज अ स्वाइन फ्लू. तो इट इज अ ड्रग ऑफ चॉइस इन द ट्रीटमेंट ऑफ स्वाइन फ्लू. तो ओसल्टामाविर उस टाइम पे बहुत चला था, राइट. नाउ थर्ड क्लास इज अ ड्रग फॉर वायरल हेपेटाइटिस, दे आर नॉन सेलेक्टिव, है ना. तो अगेंस्ट द हेपेटाइटिस बी उसमें लैमेओडिन आता है, एंटाकाविर, एडोफोविर, देन डिपिओक्सिल, टेनोफोविर, टेल्बिउडिन. एंड इफेक्टिव अगेंस्ट द हेपेटाइटिस सी, रिबाविरिन, इंटरफेरॉन अल्फा, सोपोजुविर, सिमेप्रेविर, डेकाल्टाविर, लेडिपाविर एंड वेलपटाविर. नाउ एंटी रिट्रोवायरल ड्रग, उसमें आता है नॉन न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर एंड नॉन न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर, प्रोटीएज इनहिबिटर. देन है ना, तो पहला है न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर. तो एग्जांपल क्या है इसके? तो देखो ज़िरोउडिन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ड्रग ऑफ चॉइस इन द ट्रीटमेंट ऑफ एड्स. देन डायएडेनोसिन, स्टाउडिन, लैमिउडिन, अबाकाविर, टेनोफिल. नॉन न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर, ये न्यूक्लियोटाइड नहीं है ना. कोणता? नेविरैपिन, डेलावेरिडिन, इट्रावेरिन एंड रिल्पावेरिन. प्रोटीज इनहिबिटर में आता है रिटोनाविर, एजेटनाविर, इंडिनाविर, नेल्फिनाविर, सेस्क्विनाविर एंड लोपिनाविर. एंट्री इनहिबिटर में आता है एन्फोवायराडाइड, इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी होगा, है ना. CCR5 रिसेप्टर इनहिबिटर में आता है मिरावायरॉक. CCR4 रिसेप्टर क्या होता है? इट इज अ रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन द सेल्स, है ना, टू विच वायरस विल अटैच टू सेल. इंटीग्रेज इनहिबिटर, इंटीग्रेज मतलब है सम वायरस क्या करते हैं, तो उनका DNA RNA अपने होस्ट सेल से DNA RNA से इंटीग्रेट करते हैं. इंटीग्रेज इनहिबिटर राल्टेग्राविर एंड डोलुटेग्राविर. अगेन क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन. The nucleic acid synthesis inhibitor, hydroxyuridine, acyclovir, ribavirin, trifluridine, azidothymidine. Some will prevent the attachment of virus, amantadine and zanamivir. Reverse transcriptase inhibitor में आता है आपका लैमिउडिन. इम्यूनोमॉडिफायर में इंटरफेरॉन, गामा ग्लोबुलिन्स, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज. एंटीवायरल ड्रग्स, नॉन रेट्रोवायरल एंटीवायरल ड्रग्स. तो उसमें एंटी हर्पेस सिम्प्लेक्स, एंटी हर्पेस वायरस ड्रग एग्जांपल है इसमें आइडोक्सोरिडिन, ट्राइफ्लूरिडिन, एसाइक्लोविर,
वेलसाइक्लोविर, फैमसाइक्लोविर, गैनसाइक्लोविर, वेलागैनसाइक्लोविर, सिडोफोविर, फॉस्कारनेट। तो इसको याद भी कैसे रखना है ना, फॉस्कारनेट के बाद में फॉर्मिवेशन, फॉर्मिवायरसन। तो सेन नेट, सेन फॉर फॉर्मिवायरसन, नेट फॉर फॉस्कारनेट, है ना। देन रिडिन, तो हाइड्रोक्सीरिडिन, ट्राइफ्लोरिडिन, ठीक है। देन वीर, वीर किस में आता है, एसाइक्लोविर, वेलसाइक्लोविर, फैमसाइक्लोविर, गैनसाइक्लोविर, वेलगैनसाइक्लोविर, है ना। एसाइक्लोविर याद रखना है ना। देन वेलासाइक्लोविर एंड फैमी, है ना, फैमसाइक्लोविर, है ना। तो एसाइक्लोविर, वेलसाइक्लोविर, फैमसाइक्लोविर, गैनसाइक्लोविर, है ना। और वेला प्लस गैन इज नोन एज वेलगैनसाइक्लोविर, सिडोफोविर। तो ऐसा याद रखना है, ठीक है। सेकंड क्लास आएगा एंटी इन्फ्लुएंजा ड्रग, जिसमें अमेंटेडिन, रिमांटेडिन, ओसेल्टामिविर, जनामाविर। थर्ड क्लास में आएगा आपका एंटी हर्पेस वायरस, नॉन सिलेक्टिव एंटीवायरल ड्रग्स, ये नॉन सिलेक्टिव होता है। तो पहला क्लास से फॉर हेपेटाइटिस बी, लामिवुडिन, आडोपोविर एंड डिपीऑक्सिल टेनोफिर। फॉर हेपेटाइटिस सी, रिबाविरिन एंड इंटरफेरॉन अल्फा। नाउ एंटी रिट्रोवायरल ड्रग्स देखो, एंटी रिट्रोवायरल ड्रग्स। तो पहला क्लास है न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर, उसको बोलते हैं NRTIs, न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर। तो इसमें देखो है ना, जिडोवुडिन, डायएडेनोसिन, है ना, डायडेनोसिन, स्टावुडिन, लैमिवुडिन, अबाकाविर, एमट्राइस्टाबिन, टेनोफिर। तो वीर में याद रखना है अबाकाविर, टेनोपोविर, वीर प्लस वुडिन प्लस सिन, सिनडिन, वुडिन एंड वीर, ऐसे याद रखना है। नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर, नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर, नेविरेपिन, इपावायरेंस, डेलावेरिडिन। Now protease inhibitors is a ritonavir, atazanavir, indianavir, nelfinavir, sequinavir, amprenavir and lopinavir। तो प्रोटीज इनहिबिटर में याद रखना है आपको रिटोनाविर, एटाजानाविर, इंडियानाविर, नेल्फिनाविर, सेक्विनाविर, एम्प्रिनाविर, लोपिनाविर। और बाद में एंट्री इनहिबिटर्स में आता है एनफोवायरेटाइड, इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है। CCR5 रिसेप्टर इनहिबिटर, मीरावायरव, integrase inhibitor, raltegravir। So tomorrow also again we will take this classification, and tomorrow we will see the individual drugs. Tomorrow we will try to finish this antiviral drugs also। एक बार antiviral drug finish हो गया, फार्माकोलॉजी का ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा, बाद में रिमेनिंग इंडस्ट्रियल फार्मेसी वगैरह वो पूरा कर लेंगे।